Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be doing a very interesting chapter of this book, that is the Bullocks. So let's just begin with this chapter. Title of our chapter is the Bullocks, right? So the title of our chapter is Two Bullocks, right? So now just let's just read this story. This is about an unusual bond between two friends. दो फ्रेंड्स के बीच में बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल बॉन्ड है. who had good times together, जिनके साथ जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, and they help each other through their bad times also, right? So Juri, the vegetable farmer है, they had two bullocks जिनका नाम है हीरा एंड मोती, right? And both were of very फाइन पचाई स्टॉक, मतलब अच्छे खासे स्टॉक के हैं वो. ग्रेट स्टैचर है उनका, मतलब ग्रेट स्टेटस है. ब्यूटीफुल टू बिहोल्ड, पकड़ने में भी बहुत ब्यूटीफुल है. इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, अपने कामों में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है. टू हैड लिव टुगेदर, बहुत ही लंबे समय तक दोनों ने साथ टाइम स्पेंड किया है. एंड दे बिकम स्वॉर्न ब्रदर्स, मतलब ऐसे हो गए जैसे कि एकदम अटूट रिश्ता है उनका. फेस टू फेस और साइड बाय साइड दे वुड होल्ड द डिस्कशंस, आपस में डिस्कस करते हैं चीजों को अपनी साइलेंट लैंग्वेज में. हाउ ईच अंडरस्टूड, हाउ ईच अदर दे अंडरस्टूड ईच थॉट्स we cannot say, but they certainly possess some of the gestures, some of the mysterious power they have, that they understand each other, right? They would express their love by licking each other and by sniffing one another, एक दूसरे के ऊपर छींक मार के, स्नीज करके, आवाज निकाल के. And sometimes they even lock their horns towards each other, and when they are released from the yoke from their day work, अपने पूरे दिन से उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है इवनिंग में, तो वो एक दूसरे को लिक करके और नजल करके एक दूसरे को उनकी थकावट को हटाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फटीक? एबिलिटी टू रेजिस्ट. दी फटीक मीन्स रेजिस्टेंस, मतलब थकावट, राइट? एंड ऑन वन ओकेजन जूरी जो है, जूरी ने इस पेयर को कहाँ भेज दिया? फादर इन लॉ के यहाँ भेज दिया. हाउ कुड द बुलक्स नो दैट वेयर दे आर बीइंग सेंट? उन्हें नहीं पता था कि कहाँ भेज रहे हैं. दे थॉट दैट द मास्टर हैड सोल्ड देम, कि शायद उनके मास्टर ने, उनके मालिक ने उनको बेच दिया है. इन द इवनिंग these two bullocks they reached near new place and they were very hungry after a long day, बिना खाने के. बट when they were brought to the manager, जब वो मैनेजर के पास पहुंचे, neither of much as stuck as his mouth in, मतलब ऐसे हो रखे थे बिल्कुल वो लोग कि उनको ऐसे चिपक नहीं रहे थे. देयर हार्ट्स वर हैवी, वो बहुत ही ज्यादा, उनका दिल भारी हो गया था. दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर होम, अपने घर से अलग हो गए. एंड दे थॉट दैट अब यही उनका घर है. न्यू विलेज, नए पीपल, एंड दे ऑल सीम्स अलीन टू देम. व्हाट डू यू मीन बाय अलीन? मीन्स आप कह सकते हैं कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा नई नई है, राइट? दे कंसल्टेड इन देयर म्यूट लैंग्वेज, एक अपनी म्यूट लैंग्वेज में दे डिस्कस्ड विद ईच अदर, ग्लांसिंग एट वन अनदर. ग्लांसिंग मीन्स एक दूसरे को देखना. out in the corner of their eyes, and they were just laying down. वहाँ बैठ गए आराम से. When the village was deep in the sleep, two of them they decide to take the risk of running away. That these two they decided that they will run away from here. Right? They pulled hard, broke their tied together. उन्होंने अपनी वो जो टीथर पहना हुआ था उसको खींचा और उसे तोड़ने लगे. And set out for home, और घर के लिए चलने लगे. The tether was very, दो बहुत ही ज्यादा टफ था. नो वन कुड हैव गेस कि भाई ये ऐसे कर पाएंगे. दैट दे वुड ब्रेक. एंड रीडबल पावर, बहुत ही ज्यादा डबल पावर लगाई उन्होंने. इट हैज एंटर टू इनटू देम, और रोप जो है वो टूट गई उनके एक वायलेंट जर्क से. जर्क मींस झटका, राइट? व्हेन ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जूडी सॉ कि जो दो बुलक्स हैं, दे वर स्टैंडिंग एट देयर ट्रोप, मतलब जहाँ पे वो खड़े करते हैं उनको, हाफ अ टेथर डैंगलिंग फ्रॉम वन ऑफ देयर नेक्स. वो जो उनका टेथर है एक में आधा टूटा हुआ, डैंगलिंग मतलब लटका हुआ है. देयर लेग्स वर मडेड टू द नीज, नीज तक उनकी लेग्स में पूरा क्या हो रखी थी? मिट्टी लग रखी. व्हेन ज्यूरी सॉ द बुलेट्स ही वाज ओवरवेल्म्ड विद अफेक्शन फॉर देम, उनको बहुत प्यार आया. ही रैन एंड थ्रू हिज आर्म अराउंड हिज नेक, और उनके नेक पे उसको वो डाल दिया उन्होंने. द नेक्स्ट डे ज्यूरी के ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम है गया, he came again and took the bullocks away, और फिर वापस से बुलक लेके चला गया उनका ब्रदर इन लॉ. नाउ देयर टाइम ही योक देम टू द वैगन, और अब इस टाइम पे उनको वो वैगन पे लेकर गए हैं. अ कपल ऑफ टाइम्स मोती वांटेड टू नॉक द वैगन इनटू द डिच, कि भाई हम लोग वहां से चला जाएं, बट हीरा हु वाज मोर टॉलरेंट ही हेल्ड हिम बैक, कि नहीं कोई बात नहीं. व्हेन दे रीच द हाउस, जब वो घर पहुंच गए, देन गया tied them with a thick ropes, और अच्छी खासी मोटी रस्सियों से उन्हें बांध दिया. एंड पेड them back for the yesterday mischiefs, और उनको उस चीज की सजा दी जो उन्होंने कल ये गलती करी थी. mischief means any
नॉटी हरकतें, राइट? एंड अगेन ही थ्रू डाउन द सेम स्ट्रॉ, वही वाली चीजें वहीं पे ही, टू हिज ओन। दे गिव द ऑयल सीड केक दिया, ग्राउंड के लेंटिल्स दिए एंड एवरीथिंग, सब कुछ दिया। नाउ टू फ्रेंड्स अगेन दे वर इन द साइलेंस इन द हाउस, पीपल वर ईटिंग डिनर, सब लोग अपना खाना खा रहे थे। जस्ट देन अ यंग गर्ल, शी जस्ट केम आउट कैरिंग अ couple of piece of bread. जो एक यंग गर्ल है, शी इज कैरिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, राइट? उसने दोनों को फीड किया एंड शी जस्ट वेंट अवे। हाउ कुड अ पीस ऑफ ब्रेड स्टिल देयर हंगर? कि कैसे एक पीस ऑफ ब्रेड से उनका भूख खत्म हो सकती है? बट इन देयर ओन हार्ट दे फील एज दो दे हैड डाउन अ फीड विच इज अ फुल मील। उनको अंदर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो हमें बहुत सारा खाना दे दिया, हमने इनको, अब इनका पेट भर गया हो। हियर टू वाज द ड्वेलिंग ऑफ सम जेंटल फोक, मतलब यहाँ पे कैसे लोग थे जो ना जेंटल फोक के थे। Well means to live. Please write down this word because this word usually come in your unseen passages. Girl जो है वो गया की daughter थी and she felt a very kind of sympathy with the two bullocks. Yes, for the bullocks. Right now, the two were yoked all day, सारा time अपने में आवाजें निकाल रहे हैं। और टुक अ लॉट ऑफ बीटिंग्स, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि भाई उनको बहुत मार पड़ रही थी। बट इन द इवनिंग दे वर टाइड अप देयर stalls, and of course at night the same little girl, she just come and feed them, each of them उनको feed करा रही थी। Now the happy result of this communication of love, that even though they eat only a few mouthfuls of the dry straw, they did not grow weak। मतलब वो बहुत कम खाना खा रही थी एज कंपैरेटिव जो वहाँ पे जो खाया करती थी। एंड बट इतना कम खाने के बावजूद भी दे वर नॉट फीलिंग वीक बिकॉज दे वर गेटिंग अ लव फ्रॉम दिस लिटिल यंग गर्ल। नाउ वन डे मोती सेड, मोती ने अपनी साइलेंट लैंग्वेज में बोला, आई कैन नॉट स्टैंड हियर फॉर लॉन्गर, मैं यहाँ पे बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सकता हूँ। हीरा, सो व्हाट डू यू से, कि क्या हम यहाँ से आज रात को भाग जाएं सारे रोप्स को तोड़ के? यस आई एग्री, बट हाउ कैन वी ब्रेक सच अ थिक रोप, हम कैसे इस थिक रोप को इतना तोड़ देंगे? दिस इज द वे, हियर इज द वे, फर्स्ट नॉ दी रोप अ बिट, मतलब थोड़ा सा उसको अपने दांतों से काटो एंड देन इट विल स्नैप अवे विद वन जर्क, और फिर एक झटके से एक तरफ खींच के वो टूट जाएगी। एट नाइट व्हेन द गर्ल शी हैड फेड both of them, she just gone off, वो चली गई। The two began to gnaw the rope, right? But the thick cord wouldn't fit in their mouths, वो इतनी थिक थी कि उनके वो माउथ में it was not able to fit. The poor fellows, they tried again and again without any luck, कि चलो हाँ उनकी किस्मत चलेगी नहीं चलेगी, but they were trying. Suddenly the door of the house एकदम खुल गया and the same girl, she just came out and the bullocks lowered their head and they began to lick her hand, और वो उसका हाथ लिक करने लग गए। Their tails stood up while she stroked their foreheads and then she said, I'm going to let you go, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, please be very quiet and just run away, otherwise these people will kill you। Right, in the house today they were talking about putting the rings in their noses, कि आपके नोज में वो लोग क्या डाल देंगे, रिंग्स डाल देंगे। नाउ शी अनटाइड द रोप, उसने रोप को खोल दिया और दोनों की दोनों बहुत साइलेंट हो गई। एंड दे डिड नॉट वांट द लिटिल गर्ल टू बी फोल्डेड फॉर देयर सेक, वो नहीं चाहते थे वो दोनों बुलक्स की शायद उनकी वजह से उनको मार पड़े, राइट? सडनली द गर्ल येल्ड, अंकल बुलक वर रनिंग अवे, कि अंकल जो बुलक्स हैं दे आर रनिंग अवे, डैडी डैडी जस्ट क्विक, एंड दे आर रनिंग अवे, वो लोग जा रहे हैं। गया एकदम भागते भागते आ गया एंड ऑफ द हाउस टू कैच द बुलक्स, दे वर रनिंग नाउ, अब वो भाग रहे हैं। एंड द गया फास्ट बिहाइंड देम, उनके पीछे। देयर वाज नो ट्रेस ऑफ फैमिलियर रोड दे हैड गॉन बाय, मतलब वो रास्ते में आ तो चुके हैं बट दे वर नॉट एट ऑल फैमिलियर विद दोज रोड्स ऑन विच दे वर ट्रैवलिंग। दे केम टू द विलेज दे हैड नेवर सीन, वो ऐसी जगह आ गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। देन टू ऑफ देम दे हॉल्टेड, मतलब रुक गए एक जगह पे। एंड दे बिगैन टू थिंक कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। हीरा सेड, इट अपीयर्स दैट वी हैव लॉस्ट आवर वे, कि हम अपना रास्ता खो बैठे हैं। दे वर डिजी विद हंगर, मतलब दे वर फीलिंग वेरी लेजी बिकॉज दे हैड नॉट ईटन सो वेल, मतलब इतने दिनों में दे हैवंट हैड अ गुड मील, राइट? बट पीस वर ग्रोइंग इन द फील्ड, फील्ड में कहीं पे मटर उग रहे थे। एंड दे बिगैन टू ब्राउज एंड स्टॉप ओकेजनली टू लिसन, कि शायद कोई आ रहा है, राइट? दे हैड स्carcely eaten a couple of mouthfuls when some men, जैसे उन्होंने थोड़ा सा मटर खाया, कुछ बंदे आए डंडी से, एंड दे केम रनिंग एंड सराउंडेड द टू फ्रेंड्स, और उनको सराउंड कर लिया, राइट? अर्ली इन द मॉर्निंग दिस टू फ्रेंड्स, they were shut up in the village, again they were put into the village pound,
The two friends they stayed tie up for week. एक हफ्ते के लिए उन्हें वापस से बांध दिया. No one उन्होंने उनको किसी ने भी एक हफ्ते के लिए कुछ नहीं दिया. No one give them so much a bit of hay. सिर्फ एक कम थोड़ी थोड़ी सी घास दे दी. Hay is a grass, right? That is the unwanted grass which is in yellow color. True water was, हाँ उन्हें पानी भी दिया गया, but that was not even enough for their nourishment. They got so weak that they were not even able to stand up, और उनके ribs भी अब बाहर दिखने लग गए थे. One day somebody beat a drum outside the enclosure towards noon. About 50 or 60 people they gathered there. वहाँ पे 50-60 लोग हैं, वो ड्रम बजा रहे थे. Then the two friends they were brought out and inspection began, और वहाँ पे inspection होने लगी. Right? People came and study their appearance. उनके appearance के बारे में पढ़ने लगे, वो जाने लगे, and they were highly disappointed when they see the bullocks. They look like cops. Cops means जैसे कोई dead bodies हो. Now suddenly they came with a beard man जिसकी red eyes है और बहुत ही ज्यादा cruel face है. He dug up his fingers into the haunches of the bullocks. Bullocks के अंदर डाला and began to talk with the clerk. When they saw their expressions, जब उनके उनके expressions देखे तो उनके hearts जो है दोनों दोस्तों के बहुत ही ज्यादा weak होने लगे. They had no doubt कि what कि who he was, ये लोग कौन हैं, and why he is, मतलब ये इनके हाथों में क्यों आ चुके हैं. They look at one another with frightened eyes और अपना सर नीचे करके. Right? He said we will run away from Gaya house in vain. हमने जितनी भी कोशिश करी गया के हाउस से भागने की, it was all in vain. Vain means useless. We won't survive this. हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते. When the auction was over, what do you mean by auction? ये वो लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, auction is something आप कह सकते हैं, that हिंदी word is slipping from my mind. बोली लगाना. Auction means किसी को बोली लगाकर बेच देना. The friends they were went off with the beard man. वो beard man के पास गए. Every bit of their body was trembling. Every bit they were feeling very shaking. Right? They could scarcely lift their feet. अपने पैर बहुत ही मुश्किल से उठा पा रहे थे. They were so frightened. वो इतने ज्यादा डरे हुए थे that they managed to keep stumbling alone, कि alone ही खड़े रहे. Or if they slow down, अगर वो slow down हुए, then they will get a good rack from their stick. उनको stick से मार पड़ेगी. Right? Along the way, they saw a herd of cows or bullocks. They were grazing in the verdant meadow. Meadow means जिस place पे पहली बार grazing हो. All the animals they were very happy. They were very sleek, बहुत ही पतले हैं. They were very supple. Right? Some were leaping about, कुछ इधर उधर हो रहे हैं. Others they were contented, वो they are satisfied by chewing their food. What a happy life. वो सोच रहे हैं क्या खुश मिजाज इनकी जिंदगियां हैं. Suddenly it seems to them कि रोड कैसी है, familiar है. Yes, यही है वो रोड जिससे गया उनको लेकर गया था. At very instant उनकी स्पीड बढ़ गई. What do you mean by pace? Pace means speed. Right? All their fatigue and weariness, मतलब बहुत they were totally थके हुए थे, वो सब गायब हो गई. एंड हियर इज द सेम वेल. वो कह रहे हैं यही है वो वेयर दे हैड वर्क द विंच टू पुल अप द बकेट्स. येट यस इट्स द सेम वेल. यही है वो बकेट जहाँ पे वो उन्होंने पानी भरने में मदद किया. मोती सेड आवर हाउस इज क्लोज बाय. हीरा को बोल रहा है हमारा घर बहुत पास है. एज दो दे हैड गॉन क्रेजी. बहुत ही ज्यादा खुश हो गए. किकिंग अप देयर हील्स लाइक calves एंड दे मेड देयर होम. They made their way off to their house. They were was their stall. उनको याद आ गया यही उनका स्टॉल है. They ran and they just stood. जबकि जो beard man है वो उनके पीछे पीछे आ गया. Yuri was sitting in his doorways, sunning himself. सन के नीचे बैठा हुआ था. As soon as he saw the bullocks, he ran and embraced them over. उनको गले लगा लिया and tears of joy, मतलब खुशी के आंसू उनकी आंखों से निकलने लगे. And one of them licked Jury's hand. और जूरी के हाथों को उन्होंने प्यार कर लिया. द बियर्ड मैन ही जस्ट केम एंड ग्रैब देयर टेथर्स. वापस से उनकी लगाम पकड़ी. These are my bullocks, said जूरी. जूरी ने कहा ये मेरी बुलक्स हैं. How can they be yours? कैसे हो सकती हैं? Just bought them at the auction at the cattle pound में. मैं उन्हें सिर्फ ऑक्शन के लिए लेकर गया था. I'll get the police station and will make a complaint against you. They are my bullocks and proof ये है कि they are stood at my door, said जूरी. In the rage means गुस्से में, this weird man he just stepped forward to drag the bullocks away. वापस से उनको लेके जाने लगा. This time मोती lower his horns. The beard man stepped back. वो पीछे हो गया. मोती charged and the जो man है he took
into his heels while Moti after him and stopped only at the outskirts of the village. उसके पीछे पीछे where he took his stand guarding on the road. And when this weird man, he acknowledged the defeat and he just went away. भाग गया and Moti again come back to struttling the same way, strutting. In a little while, their trough was filled with oil seed cake. उनका खाने की जगह trough is a place जहाँ पे उनको खाना खिलाया जाता है. सब चीजें भर दी, hay, grain. The two friends वापस से खाने लगे and Jury stood by and stroked them and vowed that he would never lend his bullocks to anyone. कभी वापस से किसी को नहीं देगा. It has been written by Munshi Premchand. Moving on to the word meaning, stature means height. Behold means उनको देखना and diligent means hardworking. Sworn mother means promise that they would be like brothers ही रहेंगे. Yoke, a long wooden piece which is placed over the neck of these two animals to attach them a plow. मतलब आप देख सकते हैं एक डला सा रहता है, एक योक डला रहता है. आपने देखा होगा बुलक्स के बीच में ऐसे यहाँ पे वो रखते हैं बुलक्स को और ये ऐसे बना हुआ होता है, राइट. फैटीग मीन्स टायर्डनेस, एलिंग मीन्स स्ट्रेंज, टेथर एक ऐसा रोग जो उनको गले में बांध दिया जाता है, टॉलरेट मीन्स ओपिनियंस को टॉलरेट करना, बेयर करना, कम्युनिकेशन ऑफ लव मीन्स बात करना, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, haunches means the backside of the animal, जो animal की backside होती है. Verdant meadow means it's a green field and sleek means बहुत ही ज़्यादा smooth और shiny है. Supple it's graceful. Cud is the grass. We all know that is partly digested. Winch is a device which is consisting of a rope and of course a chain which is around a wheel, right? To pull item. वही जो जिसको हम hair भी बोलते हैं, that hair की spelling HEIR होती है. Took to heels, took to his heels मतलब वहां से भाग जाना. Please write down this phrase, this is very important. And strutting means walking very proudly and woe means promise करना, right? Moving on to the exercises, first we'll be completing with the take the correct options. New houses, नए villages and नए people, they all seems dash to them, they all seems alien to them, कि वो बहुत ज्यादा नए हैं. When the beard man said that the bullocks was his, jury said the proof that they were यही है वो उनकी bullocks कैसे, that they had come and stood at their his door, वो उनके घर पे आके खड़ी हो गई हैं दोनों. In the morning when jury saw the two bullocks which is standing at the trough, he ran and threw his arms, he ran and sent a message, he ran and told his wife. In the morning when the jury saw the two bullocks standing at the trough, he उसको उनको गले लगा लिया, right? When they realized from the yoke the two bullocks would, when they released from the yoke the two bullocks क्या करने लग गई, they just उन्होंने अपने वहां से जब वो रिलीज हो गई तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी. The two bullocks ate only a few mouthfuls of this dry straw and they become too weak because they were fed by Gaya's daughter. No, they did not get enough. Yes, they did not need more than this. Secretly ate the food. No, this. Moving on to the fill in the blanks, they pulled hard and broke their dash together and they set out. वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे. So they pulled out, they pulled hard and broke their what? They broke their tether. Right. And they set out for home. और वो घर की तरफ. All the animals, they were very happy. They were very sleek and supple. Right. Jury was sitting in his doorways. वो अपने घर पे बैठा हुआ था. Dash himself. What he was doing, he was sunning himself. वो धूप में बैठा हुआ था, राइट. इन द रेज, रेज में, गुस्से में, जो बियर्डेड मैन है, ही पुट फॉरवर्ड, वो आगे आया टू ड्रैग व्हाट, टू ड्रैग द बुलक्स अवे. सो इन द रेज द बियर्डेड मैन, right. Next is Gaya came a dash of the house to catch the what, to catch the bullocks. So he just came rushing out of the house to catch the bullocks, right. Moving on to the true and false. Jury, the vegetable farmer, they had two bullocks. Ira and Moti, of course, it was two, right? Gaya did not came rushing out of their house to catch the bullocks. This is absolutely false. Of course, he came out rushing.
Jury was sitting in the doorway. This is true. He was sunning himself, right? When the auction was over, the two friends they went off to the bearded man. No, this is false. वो वहां से भाग गई थी. The bearded man did not came up and grabbed his tither. It's false. Of course he came. Moving on to the question answers. Please do all these question answers at your own, and I hope you all understood this chapter. Please go through all the word meanings and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.